ओ संस्कृत संभाषण कक्षायां वः स्वागतम्। ह्यः अस्माभिः योगवासिष्ठतः प्रथमश्लोकस्य वाचनं कृतमासीत्। पुनरपि एकदा आवर्तनं क्रियते। पुनश्च अग्रे वयं पश्यामः। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। कापि बालिका अर्थं बोधयिष्यति? अहम् एकदा बोधयामि, भवत्यः शृण्वन्तु, पुनः पश्चात् भवत्यः अपि बोधयन्तु। यस्मात् सर्वेऽपि प्राणिनः उत्पत्तिं प्राप्नुवन्ति यत्कृपया एव जीवनस्थितिं च प्रापयन्ति। पुनश्च लयकाले यस्मिन् सर्वेऽपि प्राणिनः विलीना भवन्ति तस्मै सत्यस्वरूपाय परमात्मने वयं नमः विधेम। अस्तु, ज्ञातम्? यत्रैव उपशमं यान्ति, यत्र अर्थात् यस्मिन् एव उपशमम्, उपशमम् अर्थात् लयं प्राप्नुवन्ति। प्रलयकाले यस्मिन् सर्वे विलीना भवन्ति सूक्ष्मरूपेण तस्मै सत्यात्मने, सत्यात्मने अर्थात् सत्यस्वरूपाय परमात्मने नमस्कारः। अस्तु, वयं नमो विधेम, एतादृशः अर्थः ज्ञातः? अन्य महोदय भवती ज्ञापयतु, यत्र इति पदस्य कः परिचयः? यत्र इति पदस्य पदपरिचयं ददातु। अव्ययपदं। यत्र इति अव्ययपदं। को अर्थः? जहाँ। हाँ, जहाँ, यस्मिन् देशे अथवा यस्मिन् काले। सम्यक्। यस्मिन् देशे, यस्मिन् काले, यस्यां नगर्याम्, एतादृशः अपि, यस्यां वेलायाम्, एतादृशः अपि अर्थो भवितुम् अर्हति। सम्यक्। अव्ययपदानां पुनः लिङ्गभेदो न भवति। यत्र अस्य शब्दस्य यस्मिन् इत्यपि अर्थः, तथैव यस्याम् इत्यपि अर्थः। ज्ञायते? उपविशतु। यत्र शब्दस्य केन अव्ययत्वं भवति पृष्ठे उपविश्य एव वदतु। केन भवति अव्ययत्वं? केन सूत्रेण? तद्धितेष्वाचामादेः चादयो सत्त्वे। सूत्रं तु सम्यक् वदति स्म, परं तद्धितेष्वाचामादे इति कथमत् सूत्रं वर्तते? द्वयोः सूत्रयोः अर्धमर्धं मेलयित्वा भवति एकं नवीनमेव सूत्रं कृत्वा वदति किमपि। तद्धितेष्वचामादेः इति तु वृद्धिं करोति। तत्र सप्तमे अध्याये चोयनिति अत उब्धायाः तद्धितेष्वचामादेः तत्र वर्तते सप्तमाध्याये द्वितीयपादे। किं सूत्रमस्ति प्रीतिमहोदये? अधिकं पृष्ठे न उपवेष्टव्यं। सम्यक्, अन्यथा ज्ञानमेव न भविष्यति। इतो अग्रे आगच्छन्तु। इमाः बालिकाः अग्रे आगच्छन्तु, इतः प्रभृति। सृष्टिजी आगे। तथैव इतः अपि स्नेहमहोदये अपि च सिया महोदय इतः अग्रे उपविशन्तु। कनिष्कप्रभृतयः सर्वाः अपि उत्तिष्ठन्तु। शीघ्रं नवीना पङ्क्ति निर्मेया। तद्धितश्च सर्वविभक्तिः अव्ययसंज्ञां कुर्वन्ति इति एतादृशानि कति सूत्राणि वर्तन्ते अष्टाध्याय्यां? 5 सूत्राणि। क्व वर्तते अव्ययप्रकरणं? प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्राणि एकदा बोधयन्तु। तद्धितश्च अलम्
अलम् अलम् अलम् अग्रे तु पुनः अपरा संज्ञा भवति शी सर्वनामस्थानमिति भिन्ना संज्ञा आगता नवीना सम्यक् अव्ययसंज्ञायाः कृते अष्टाध्याय्यां कति सूत्राणि वर्तन्ते प्रतिभे 5 कुतः प्रारम्भं भवति प्रारम्भः भवति सरादिनिपातमव्ययम् अपि च अन्तिमं सूत्रं किं वर्तते अव्ययीभावश्च एतानि 5 सूत्राणि अव्ययसंज्ञां कुर्वन्ति अव्ययसंज्ञां विदधति अस्तु तर्हि यत्र इति अव्ययपदं वर्तते केन सूत्रेण तद्धितश्च सर्वविभक्तिः प्रत्ययः कः स्मर्यते सिया महोदये प्रत्ययः कः अस्मिन् शब्दे प्रातिपदिकं किमस्ति प्रत्ययः कः ददातु तत्र ददातु किं प्रातिपदिकं कस्य प्रत्ययः इति बोधयतु शीघ्रं यत्र इति पदे यद् यद् इति प्रातिपदिकं यद् यद् इति प्रातिपदिकं वर्तते अपि च प्रत्ययः कः त्रल् इति प्रत्ययः त्रल् इति प्रत्ययः वर्तते अस्तु यान्ति यान्ति इत्यत्र कः धातुः कनिष्के यान्ति इति कुत्रत्यं रूपं मम वार्तां ध्यानेन शृण्वन्तु यदा अहं बोधयामि तदा ध्यानेन श्रोतव्यं न ज्ञायते सिमरन् महोदय भवती बोधयिष्यति यान्ति इति पदस्य परिचयः कारणीयः का बोधयति वदतु वदतु उत्तमपुरुष नहीं यथा पठति पठतः पठन्ति तथैव याति यातः यान्ति या प्रापणे धातुः वर्तते कः धातुः या प्रापणे कस्य गणस्य धातुः वर्तते अयं धातुः कस्य गणस्य अयम् आदादिकः धातुः अयम् आदादिकः धातुः अर्थात् अदादिगणस्य अयं धातुः वर्तते अट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनं याति यातः यान्ति तस्मै तस्मै शीतल महोदय तस्मै इति कुत्रत्यं रूपं चतुर्थी विभक्ति प्रातिपदिकं किं तस्मै इति तु पदं वर्तते प्रातिपदिकं नास्ति तस्मै भवत्यः जानन्ति प्रातिपदिकानि इति तु मूलशब्दरूपाणि भवन्ति पुनः यदा तेषां पदत्वं भवति तदैव तेषां वाक्येषु प्रयोगः अन्यथा न नियमः एकः स्मृतः स्यात् युष्माभिः अपदं न प्रयुञ्जीत तर्हि अत्र वाक्ये पृच्छ्यते तर्हि वाक्ये तु प्रातिपदिकं भवितुं नैव अर्हति वाक्ये तु पदमेव भवितुम् अर्हति अहं पृच्छामि तस्मै इति पदस्य प्रातिपदिकं किम् अस्ति तद् तदिति प्रातिपदिकं तकारः अकारः पुनश्च दकारः तदिति मूल प्रातिपदिकं वर्तते अस्तु तस्य चतुर्थ्यां रूपं चतुर्थ्याः एकवचनं सम्पूर्णां चतुर्थीं विभक्तिं बोधयतु तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः यदि पुल्लिङ्गे वर्तते तर्हि यदि नपुंसकलिङ्गे पुनः समानमेव भविष्यति तस्मै ताभ्यां प्रारम्भतः एकदा वदन्तु तद् शब्दस्य रूपाणि पुल्लिङ्गे सः तौ तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु सम्यक् अस्तु सत्यात्मने इत्यत्र खुशबूजी समासं बोधयतु सत्यात्मने इत्यत्र समासः वर्तते कः समासः आस्थे वदतु सत्यात्मने इत्यत्र कः समासः सत्यं वदन्तु बहुव्रीहि समासः सत्यं सत्यम् आत्मा यस्य
स सत्यात्मा तस्मै सत्यात्मने। सत्य आत्मा है जिसका, वह सत्यात्मा, उसके लिए। तस्मै सत्यात्मने। अपि च आत्मा शब्दस्य कः अर्थः अत्र? स्वरूपम। आत्मा शब्द का क्या अर्थ है यहाँ? स्वरूपम। सत्यम स्वरूपम, सत्यम आत्मा अर्थात स्वरूपम यस्य स सत्यात्मा तस्मै सत्यात्मने। तस्मै सत्यात्मने नमः। यतः इत्यत्र अव्यक्तम् अस्ति अथवा विभक्तिवचनं किम्? अस्तु। नमः इति, नमः इत्यपि अव्यपदमेव। तद् योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। नमः इति पदे चतुर्थी विभक्ति नास्ति। नमः इति पदस्य योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं वषड्योगाच्च इत्यनेन सूत्रेण। इति कृत्वैव नमः पदस्य योगे क्व अत्र चतुर्थीं पश्यामः अस्मिन् श्लोके? तस्मै इति पदे, अपि च सत्यात्मने इति पदे। सम्यक्। इदानीम् अर्थबोधः सञ्जातः। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति, अर्थात् यस्माद् परमात्मनः, यस्माद् परमेश्वराद् सर्वाणि भूतानि, सर्वे अपि प्राणिनः, सर्वेपि प्राणिनः, अपि च सर्वे अपि अप्राणिनः, अर्थात् सर्वमपि जगत्, प्राणी अप्राणी रूप सर्वमपि जगत् यस्मात् परमेश्वरात् प्रतिभान्ति, यस्मात् परमेश्वरात् सर्वमपि जगत् उत्पन्नं भवति, उत्पद्यते, अपि च स्थितानि, स्थितानि अर्थात् जीवनस्थितिं प्राप्नोति, अपि च यत्रैव उपशमं यान्ति, पुनः प्रलयकाले यस्मिन्नेव ईश्वरे सर्वमपि जगत् विलीनं भवति, तस्मै। सर्वमपि जगत् तु उत्पद्यते, स्थितिं प्राप्नोति, लयमपि प्राप्नोति, परम् ईश्वरः तु न कदाचित् उत्पद्यते, नैव विलीनं भवति, नैव प्रलयं प्राप्नोति। तादृशस्य सत्यस्वरूपाय परमात्मने नमः। अस्तु, सञ्जातः। अस्तु, द्वितीयं श्लोकं पश्यामः इदानीं। तावता भवत्यः उच्चारणं कुर्वन्तु अस्य। यत्रैवोपशमं यान्ति यतः सर्वाणि भूतानि वोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। इदानीम् अस्माकं द्वितीयः श्लोकः। प्रथमम् उच्चारणं कुर्मः। ज्ञाता तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शन दृश्यभुः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै जप्त्यात्मने नमः। तस्मै जप्त्यात्मने नमः। जप्ति इति मूलशब्दः वर्तते, आत्मने इत्यनेन सह सन्धि वर्तते इति कृत्वा जप्त्यात्मने एको यणचि। अस्तु, जप्त्यात्मने नमः। पुनरपि एकदा। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शन दृश्यभुः कर्ता हेतुः क्रिया। एतादृशः अयं शब्दः वर्तते, ज्ञप्ति। सम्यक्। ज्ञप्ति अर्थात् ज्ञानं। परमात्मनः स्वरूपत्रयं विशेषतः अस्माभिः स्मर्यते। ज्ञानं स्वरूपं वर्तते, सत्यं स्वरूपं वर्तते, अपि च आनन्द इति स्वरूपं वर्तते। इति कृत्वैव उच्चार्यते सच्चिदानन्दस्वरूपं।
सत् अर्थात सत्य स्वरूपता वर्तते परमेश्वरस्य, चित् अर्थात ज्ञान स्वरूपता वर्तते, अपि च आनंद स्वरूपता वर्तते। अत्र श्लोकत्रये प्रथमे श्लोके पुनः सर्वतः प्राक् सत्यस्वरूपाय परमात्मने नमः इति उच्यते। द्वितीय श्लोके पुनः ज्ञानस्वरूपाय जप्त्यात्मने नमः इति उच्यते। तृतीय श्लोके तु आनंदस्वरूपाय परमात्मने नमः इति उद्घोष्यते। पुनः द्वितीयं श्लोकं पश्यन्तु। ज्ञाता, सर्वतः प्राग् वयं विभक्तिविच्छेदं पश्यामः, विभक्तिवचनं पश्यामः। अस्तु, ज्ञाता इति प्रथमैकवचनान्तं पदं, यथा मूलं वर्तते, प्रातिपदिकं वर्तते ज्ञात्री। किं वर्तते? ज्ञात्री। यथा कर्त्री, कर्ता कर्तारौ, तथैव ज्ञात्री इति पदस्य। अस्तु, ज्ञाता ज्ञातारौ ज्ञातारः। स्नेह महोदय, प्रथमैकवचनान्तं पदं ज्ञाता इति प्रथमैकवचनान्तं पदं, तथैव ज्ञानमित्यपि वदन्तु। प्रथमैकवचनान्तं पदं ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि, तथा इति अव्ययपदं। प्रकारवचने थाल् इति प्रत्ययो वर्तते। सम्यक्। तथा ज्ञेयं, ज्ञेयं प्रथमान्तं पदं, ज्ञेयं ज्ञेये ज्ञेयानि, फलं फले फलानि, ज्ञेयं ज्ञेये ज्ञेयानि। द्रष्टा, द्रष्टा द्रष्टारौ, प्रातिपदिकं किं? द्रष्ट्री। द्रष्ट्री इत्यत्र कः प्रत्ययः, कः धातुः? कः धातुः? दृशिर्प्रेक्षणे। कः धातुः? दृशिर्प्रेक्षणे। तस्य इत्संज्ञायां सत्यां किं रूपम् अवशिष्यते? दृश्। अपि च प्रत्ययः कः निधि महोदय? द्रष्ट्रीति पदे नूल् त्रिचौ तृच्, कर्त्री हर्त्री धर्त्री द्रष्ट्री, सर्वेषु कः प्रत्ययः? तृच्। केन सूत्रेण भवति? नूल् त्रिचौ इत्यनेन सूत्रेण। अस्तु, द्रष्टा। पुनः अग्रिमः शब्दः दर्शन दृश्यभुः। दर्शन दृश्यभुः इति समस्तं पदं वर्तते, प्रथमान्तमेव। सम्यक्। अग्रे कर्ता, कर्ता इत्यपि प्रथमान्तं। हेतुः नैव, हेतुः इति प्रथमान्तं, गुरुवद् रूपाणि भवन्ति। हेतुः हेतु हेतवः। सम्यक्। क्रिया इति प्रथमान्तं, क्रिया क्रिये क्रियाः, लता लते लताः। यस्मात् पञ्चम्यन्तं पदं, पञ्चम्येकवचनान्तं पदं। तस्मै चतुर्थेकवचनान्तं पदं। जप्त्यात्मने नमः। जप्त्यात्मने इति चतुर्थ्यन्तं पदं, नमः इति अव्ययपदम्। सम्यक्। अत्र पश्यन्तु, अस्मिन् श्लोके ज्ञानस्वरूपाय परमात्मने नमः इति उच्यते मूलत्वेन। जप्त्यात्मने, जप्तिः आत्मा यस्य, पूर्ववत् समासः। जप्त्यात्मने इत्यत्र पूर्ववत् बहुव्रीहि समासः। यथा सत्यात्मने इत्यत्र कः समासः आसीत्? बहुव्रीहि समासः। तथैव अत्रापि केवलं सत्यमिति पदस्य स्थाने जप्तिः इति पदं करणीयमस्ति। तर्हि उच्चार स्वयं बोधयन्तु, कः समासः? तस्मै जप्तिः आत्मा यस्य स जप्त्यात्मा, तस्मै जप्त्यात्मने नमः। जप्तिः अर्थात ज्ञान, आत्मा अर्थात स्वरूप, यस्य माने जिसका, ज्ञान ही स्वरूप है जिसका। ऐसे ज्ञान स्वरूप भगवान जी के लिए नमस्कार हो। जप्त्यात्मने परमात्मने नमः। अब जब भगवान जी का ज्ञान स्वरूप होता है तो भगवान जी का ज्ञान स्वरूप होता है तो वहाँ क्या घटित होता है उसको पहले कहा है। तीन
प्रकार से कहा है कि भगवान जी के ज्ञान स्वरूप होने के कारण से ही इस संसार में हमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन वस्तुएं देखने को मिलती है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता कौन होता है? यह जानाति स ज्ञाता, जो जानता है। जैसे हम जानते हैं ना, तो हम ज्ञाता हो गए। और अभी मैं नक्श जी को जान रही हूँ, तो ये नक्श जी मेरे लिए क्या हो गए? ज्ञेय। ज्ञेय माने जानने योग्य। ज्ञेय माने क्या? जानने योग्य। तो जो जिस चीज को हम जान रहे होते हैं, जो हमारे ज्ञान का विषय होता है, उसको क्या बोलते हैं? ज्ञेय। ठीक है, तो हम जिसको जान रहे हैं वो हमारे, जैसे इस श्लोक को अभी जान रहे हैं तो हम सब ज्ञाता है। ये श्लोक हमारे लिए क्या हो गया? अभी ज्ञेय पदार्थ हो गया। हमारे सामने कोई वृक्ष है, उसको हम देख रहे हैं, तो वो वृक्ष हमारे लिए क्या हो गया? ज्ञेय पदार्थ हो गया। और उसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो क्या हो गया? ज्ञान। तो भगवान मूल रूप से, चूंकि भगवान जी ज्ञान स्वरूप है, इसलिए हमें सृष्टि में ये त्रैविध्य देखने को मिलता है, ज्ञाता, ज्ञानम और ज्ञेय। ठीक है, और इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो दृष्टा, दर्शन, दृश्य भूः। भूः माने स्थिति। दृष्टा की स्थिति, दर्शन की स्थिति और दृश्य की स्थिति भी भगवान जी की चिद्रूपता के कारण से ही होती है। उस बस ज्ञाता इत्यादि के स्थान पे ही दूसरे शब्द है। हम जानते हैं माने हम देख रहे हैं, हम दृष्टा हैं। जिसको देख रहे हैं वो दृश्य है। वो क्या है? दृश्य है। दृश्य माने देखने योग्य। और जो देखा जा रहा है, जो देखा जा रहा है वो दृश्य हो गया। और दर्शन माने क्या हुआ? ज्ञानम। जो दर्शन हो रहा है, जो ज्ञान हो रहा है, जो ज्ञान हो रहा है, जानकारी, इन सूचना प्राप्त हो रही है, उसी को क्या कह रहे हैं? दर्शनम। ठीक है, तो भगवान जी की चिद्रूपता के कारण से ही ये तीन स्थितियां हैं, दृष्टा, दर्शन, दृश्य भूः। और चिद्रूपता के कारण से एक कार्य और होता है, क्या? कर्ता हेतु क्रिया। कर्ता, हम बहुत सारी क्रियाओं के कर्ता भी है ना, और जो हमारे द्वारा की जा रही है वो क्या है? क्रिया है। और उन क्रियाओं को हम किन्हीं ना किन्हीं हेतुओं से, साधनों से करते हैं, वो क्या है? हेतु है। कर्ता हेतु क्रिया यस्माद्। ये सब कुछ, ये तीन तीन स्थितियां, ये तीन त्रिक गिनाए गए ना यहाँ पर। कौन कौन से? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। इसी तरह से दृष्टा, दर्शन और दृश्य और कर्ता हेतु क्रिया। ये संसार में किस कारण से देखने को मिलता है? तो चिद्रूपता से। क्योंकि भगवान जी चैतन्य रूप है, इसलिए ये सारी स्थितियां संसार में दिखाई पड़ती हैं। यदि भगवान जी में चिद्रूपता ना हो, ज्ञान रूपता ना हो, तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, या दृष्टा, दर्शन और दृश्य, या फिर क्रिया, हेतु और कर्ता, ये सब दिखाई नहीं पड़ सकता। तो इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी भगवान जी की स्तुति करते हुए, ज्ञान स्वरूप भगवान जी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि संसार में यस्माद, यस्माद अर्थात जिससे, जिसके होने से संसार में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, दृष्टा, दर्शन और दृश्य, कर्ता, हेतु और क्रिया, इनकी स्थिति जिसके कारण से होती है, तस्मै जप्त्यात्मने नमः। उन ज्ञान स्वरूप भगवान जी के लिए हमारा नमस्कार है। श्लोकार्थः ज्ञातः। श्लोकस्य उच्चारणं पुनरपि एकदा भवतु। कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै जप्त्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं, दृष्टा दर्शन दृश्य भूः, कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै जप्त्यात्मने नमः। अस्तु, अद्य तावदेव।
शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम नमो नमः।